Assalamu alaikum class 9. So here we are going to solve exercise 2.2 question number 1. Write the following in logarithmic form. We have learned कि अगर हम कोई भी नंबर को logarithm में convert करते हैं, for example if I have 2 cube equals 8, so in logarithm we basically find out the power. So I can write the whole number as log 8 with base 2 is equal to, and that would be my answer. It is 3. So let's have a look. How do I solve part 1? It is 7 cube equals 343. So I can write this number as log 343 with base 7 equals 3. Now let's have a look on part 2. 3 to the power minus 4 equals 1 over 81. So I can write this number log 1 over 81 with base 3 equals minus 4. Same as part 3, 10 to the power minus 3 equals 0.001, and part 4, root m square cube equals 1. So here I'll write log 0.001 with base 10 equals minus 3. और यहाँ ये बात मैं आपको बता चुका था कि log with base 10, when the log have a base 10, it is called common logarithm. What is? और common logarithm में हम इस तरह नहीं बोलते कि log 0.001 with base 10. It is just says as log 0.001 equals minus 3. Now part 4 को देखिए. It is अच्छा part 4 में मुझे सबसे पहले ये रूट को खत्म करना है, तो मैं जरा इसको सिंप्लीफाई कर लूं. It is root m square, sorry, cube root m square 1. So cube root is basically equal to 1 over 3. ओके, अंदर 2 लिखा हुआ है, सो 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, दैट वुड बी m 2 over 3. नाउ माय पावर इज 2 over 3. So when I'll convert that one into logarithm, it will be equal to log 1 with base m equals 2 over 3. Got it? Now let's move to the question 2. Question 2 is about what is the write the following in exponential form. यानी कि हमें logarithmic form में दिया हुआ है और हम exponential form में यहाँ पे लिखेंगे. So log 27, log 81 with base 27 equals 4 over 3. So I've told you this one is basically log का जो आंसर होता है वो basically पावर होती है. ओके, और यहाँ पे ये बेसिकली बेस है. ओके, or this is the answer to the base with power. Okay, so I can write this one as in logarithmic it is 27 with power 4 over 3 equals 81. Okay, same as part 2, log 1 over 8 with base 2 equals minus 3. So I can write 2 base 2 with power minus 3 equals 1 over 8. Same as part 3, log, अब log 10 है तो मैं इसको log 1 with base 10 नहीं बोलूंगा, बस log 1 equals 0. So I'll write base 10 to the power 0 equals 1. And then part 4, it is log 0.001 and the base is 10 equals minus 2. So the base 10 to the power minus 2 equals 0.001. Okay. Meanwhile, if you have any question or query in question number 1 and 2, so please write in the comment box. Let's move to the part 3. Question number 3.
Find the unknown in the following. Okay, have a look. In part 1, it is log x with base 32 equals 1/2 और मुझे यहाँ पर ये जो x नजर आ रहा है इस ये अननोन है, ये मुझे मालूम करना है। तो अब आप देखिए मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। आई एम गोना राइट sorry, first I'll write the base. I'll write in exponential form. So the 32 with power half equals x. तो मुझे अब इसको सॉल्व करना है। ये पावर हाफ है, that is basically root. So root 32 equals x. So what is root 32? Root 32 is not a perfect square. लेकिन अगर मैं कुछ और देखूं, 16 2 32 है, 16 2 32 है और 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो आई कैन राइट 16 multiplied by under root 2 equals x. So it can be written as under root 16 is 4, under root 2 same as it is equal to x. So this is my answer. Okay. Now have a look on part 2. It is log a 3 equals 1/2. So that would be with base a power base equals 3. अब इसमें मैं क्या करूंगा, मुझे यहाँ पर किसी तरह ये रूट चाहिए। इट इज बेसिकली रूट ए इक्वल्स 3। तो अगर मुझे ए मालूम करना है तो मुझे यहाँ से रूट रिमूव करना है। रूट किस तरह रिमूव होगा, आई विल टेक स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ओके, सो अगर मैं दोनों जगह स्क्वायरिंग करता हूँ, क्यों स्क्वायरिंग करिए, क्योंकि मुझे रूट को रिमूव करना है, मुझे ए की वैल्यू मालूम करनी है। तो इट इज ए इक्वल्स एंड 3 स्क्वायर इज 9. दिस इज माय आंसर। हैव अ लुक ऑन part 3. Part 3 is about log root 5 25 equals y. So that would be with base 5 and power y equals 25. अब मुझे यहाँ पे y, तो मुझे ऐसे करना है कि किसी तरह यहाँ पर भी रूट 5 आ जाए, तो इक्वेशन कैन बी इक्वल। अगर हमारे पास बेस ये एक रूल है, if you have equal bases, for example a to the power m equals a to the power n, so you can write m equals n. Got it? अगर आपकी बेस इक्वल है तो मुझे यहाँ पे 25 को कुछ इस तरह लिखना है कि ये रूट 5 हो जाए। तो अगर मैं 25 को इस तरह लिखूं कि फॉर एग्जाम्पल रूट रूट 25, तो मेरा आंसर आ जाएगा 5, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये तो मेरा आंसर आ जाएगा 5। तो मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए कि मैं y की वैल्यू मालूम कर लूं, रूट 5 यहाँ पे किस तरह आए। ओके, तो अगर मैं ऐसा करूं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम इस तरह सोचें कि 5 this is 1/2 to the power y equals it is 25. ओके, अभी मैं इस सेंटेंस इस स्टेप को रिमूव कर रहा हूँ, तो दिस इज y 5y/2 equals 25. तो अब मुझे यहाँ पर आई कैन राइट इट एज 5 स्क्वायर, it is 5y/2. Now have a look, these two bases are same. ओके, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, सो आई कैन इक्वेट y/2 इक्वल्स 2, और मैं अब 2 को वहां पे शिफ्ट करूंगा, सो 2 into 2 equals 4. दिस इज माय आंसर, y equals 4, a equals 9, and then it is x equals 4 root 2. Same as with part 4, log x with base 4 equals 3/2. Have a look. Log x with base 4
इक्वल्स 3/2। अब इसको मैं किस तरह सॉल्व करूंगा? अगेन पहले मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लूं। 4 to the power 3/2 equals x। नाउ अब मुझे x की वैल्यू मालूम करनी है। इट इज बेसिकली 4 क्यूब और मैं 1/2 को सेपरेट कर रहा हूँ क्योंकि पावर टू द पावर मल्टीप्लाई होंगी तो ये दोबारा 3/2 हो जाएगा। 1/2 क्यों सेपरेट किया? क्योंकि ये एक्चुअली रूट बन जाएगा मेरे पास। तो 4 क्यूब है, एक पेयर बाहर आ जाएगा, 4 स्क्वायर इट इज आउटसाइड, देन 1 4 विल बी इनसाइड। दैट इज माय आंसर। अगर किसी को कोई भी क्यूरी है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकता है। नाउ log 100 with base 10 equals y. Have a look on this one. Log 100 with base 10 equals y. So base 10 to the power y equals 100. I'll convert that 100 into 10. So it is 10 squared, 10y. So base are same, power can be equal. So y equals 2. And then same as log 64 with base a equals 3. Have a look on part 6. Log 64 with base a equals 3. So base a to the power 3 equals 64. So I'll convert that one. I'll actually मैं यहाँ से ये 3 remove करूंगा और 3 remove करने के लिए I'll take cube root on both sides. Taking cube root on both sides. Okay, so that would be, and this would be cube. ओके, मैं ये इक्वल टू मिटा देता हूं। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह होगा कि this cube root cancel, this is a, and 64 cube root is 4, क्योंकि 4 को अगर आप 3 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 64 है। Part 5, 6, have a look on part 7. Log 1 with base a equals 0. Log 1 with base a equals 0. Okay, base a to the power 0 equals 1. So how would I get the 0 here? So 1 to the power, I can write it as 1 to the power 0 because every number to the power 0 is equal to 1. So अगर यहाँ पे दोनों पावर्स इक्वल है तो आप बेसिस को इक्वल कर सकते हैं। वही रूल जो मैंने आपको ऊपर बताया था उसका रिवर्स भी है यहाँ पे, यानी कि अगर आपकी बेस एक जैसी है तो पावर कैन बी इक्वेटेबल, और अगर आपकी पावर एक जैसी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ a टू द पावर m इक्वल्स b टू द पावर m, तो अगर आपकी पावर एक जैसी है यू कैन इक्वेट बेसिस, सो योर बेसिस विल बी इक्वल। गॉट इट? वही रूल मैंने यहाँ पर अप्लाई किया। नाउ पार्ट 8, log 55 with base 55 equals y. Log 55 with base 55 equals y. So it will be 55 to the power y equals 55. So मुझे बेस सेम है तो यहाँ पावर कुछ नहीं है, इट्स मीन यहाँ पावर 1 है। आई कैन इजीली राइट y equals 1. Okay, now log, it is part 9. What is it? Log 8 with base 64 equals x/2. Log 8 with base 64 equals x/2. So it will be 64 x/2 equals 8. अब x/2 को मैं सेपरेट कर लेता हूँ, 64x and then it is 1/2 equals 8. क्यों करा? क्योंकि मुझे पता है 1/2 स्क्वायर रूट है। 64x, this is square root, it is 8 square root, squaring on both sides ताकि सबसे पहले ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाए। Squaring both sides. So अब ये होगा कि it will be 64x here और यहाँ पे 8 square is 64. अब again base same, so power can be equal. So x equals 1. Got it? So if you have any query or any question, please
Please feel free to ask. So have a look on part 7, 8, 9. इसका जो आंसर है 1 आ रहा है. अगर आप नोट करें तो इसमें क्या खास बात है कि इसका आंसर 1 आ रहा है. ये भी एक सोचने की यहाँ पर बात है कि हमें सिर्फ देखकर मालूम हो जाए कि हमारा आंसर क्या होगा. Got it? So if you have any question or query, please feel free to ask and do subscribe and like my page. Allah Hafiz everyone.